Hey everyone, Assalamu alaikum and welcome Toronto. Welcome to MaxJeff show one more time. It will be some new faces, most of them old faces, but yes, we are talking about today Australia versus New Zealand series happening for test. काफी टेस्ट मैच काफी अच्छा चल रहा है, सीरीज काफी अच्छी चल रही है तो डिमांड थी कि because my show is all about cricket and passionate about sports. So अगर पाकिस्तान का गेम नहीं भी हो रहा तो it's okay. We are here to talk about exciting games and exciting things. Okay, let's talk about first of all, let's talk about sponsors. हम लोगों के शो को स्पॉन्सर किया है आज मोहम्मद रमीज योर होंडा का है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेंट हैं और अगर आपको गाड़ी होंडा लेनी हो तो डेफिनेटली प्लीज कांटेक्ट मोहम्मद रमीज योर होंडा गाय। ही वर्क्स एट क्लासिक होंडा डीलरशिप which is in Brampton, so please contact him 416-569-7249. अगर आप स्टूडेंट हैं, इमिग्रेंट हैं और किसी किस्म की भी क्रेडिट लाइन के लिए आपको लाइक यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, प्लीज कांटेक्ट रमीज 416-569-7249. हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं आज के आरसैक स्पोर्ट्स। ये हमारे साथ होते भी हैं, सुल्तान भाई रोजाना हमारे फिक्स पैनलिस्ट में से हैं, तो प्लीज इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेना हो, डेफिनेटली अगर क्रिकेट इक्विपमेंट लेना है तो प्लीज कांटेक्ट सुल्तान भाई 647-461-3110 and you can email him as well info@rsacksports.com और इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो प्लीज फॉलो हिम और डेफिनेटली इफ यू मेंशन स्पोर्ट्समैन यू डेफिनेटली विल गेट अ डिस्काउंट। हमारे जो तीसरे स्पॉन्सर हैं फैजान लॉ, ये भी हमारे साथ मिसागा डॉल्फिन्स के काफी अच्छे प्लेयर्स हैं और खेलते हैं और आई वांट फैजान के तुम इस साल पूरा सीजन खेलो प्रॉपर्ली। और ये इन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएटेड एंड ही जस्ट कंप्लीटेड हिज लॉ फर्म एंड ही स्टार्टेड हिज ओन लॉ फर्म व्हिच इज कॉल्ड फैजान लॉ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन एंड यू कैन विजिट हिज वेबसाइट faizanlaw.com and you can also email him info@faizanlaw.com if you have any legal challenges while litigation, tribunal representations, wills and estate, immigration, real estate, notary and commission, please contact Faizan Law 905-277-2555 and please do mention sports trend or MaxJeff. Okay, so ये तो हो गए sponsors जी भाई। अब मैं I would like to invite, आज का जो पैनल है काफी बड़ा पैनल है, तो let me invite everyone on the show. Okay, so let me start with, I want everyone start from Arman. Introduce yourself. अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ से खेलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दें व्यूअर्स को और देन एक एक करके पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन आई गोना स्टार्ट अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। जी अरमान प्लीज। Thank you for having me on the show, Farooq bhai and Max bhai. My name is Arman. Cricket खेलता हूँ मैं GTA में डॉल्फिन्स की तरफ से और बस बहुत क्लब से खेल चुका हूँ और बहुत क्लब्स का पार्ट हो चुका हूँ, लेकिन प्राइमरली अब सिर्फ डॉल्फिन्स की तरफ से खेलता हूँ। I think Arman is just kind of a little bit modest. Arman has represented Canada on under 19 level, and he also got selected to play for Canada in a national team. But I think unfortunately that tour didn't go or something like that, right, Arman? So I was fortunate to be picked in March. हम Malaysia जाना था Challenge Cup A के लिए. However, it got postponed and now it's being held in Toronto in 2021. So hopefully I can work hard and still be on that team there. So among us is one is the Canadian national player. So next, मैं उनकी पहले नेक्स्ट जाने से पहले मैं थोड़ा सा अरमान का बता दूं। अरमान इतने मॉडेस्ट नहीं। आई मीन डॉल्फिन्स के ये हेड ऑफ ऑपरेशंस भी हैं, डॉल्फिन्स के ये फिटनेस कोच भी हैं। आई मीन जितने भी लास्ट 3 इयर्स से हम लोगों के जितने भी फिटनेस ऑफ सीजन ट्रेनिंग होते हैं, अरमान रन द होल शो फ्रॉम A to Z. Then during the season, definitely management needs support and Arman is the one who's like taking care of all the players issues as well. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस किस तरह, और ये लोग like especially youngsters को गाइड करना off the field and during the game as well. He's a brilliant keeper as well and I'm sure, I mean, काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं अरमान के. अरमान no needs, I mean, we all know Arman Kapoor as like, I mean, a very nice and humble guy as well. So plus अरमान मैं तुम्हारा बहुत जिक्र करता हूँ शो में, तुमने शायद कभी सुना नहीं है, लेकिन we always discuss about you. So welcome to the show. Okay. Thank you. I'm humbled. Yes, Abhi, please introduce yourself. I think तुम दूसरी या तीसरी दफा आ रहे हो शो में, तो please. Happy to be here, guys. I'm Abhi Singh. मैं यहाँ locally Whitby में खेलता हूँ with the local Whitby players and I've been active primarily in running the league here locally in Durham.
Sahi. Yes, Shri. Yeah. Thank you for having me on the show here. Hello, everyone. I live in Whitby too. Like me and Abhi don't live. We probably are half a kilometer away. So I play in Whitby with the locals here, and have coordinated with Abhi on organizing the league. I mean, it isn't just a casual league. We play on Thursdays. So Yes. it's been a lot of fun. I think since COVID, like we kind of discovered that there's so many cricket enthusiasts in this part of the world, and it's great to have some fun. Yes, let me add some like addition to Shri. I mean, I played cricket Shri for at least 4 months or 6 months. What I experienced, I mean, he play less, but he has a very cricketing brain. He knows what is happening in field and off field. Definitely, I mean, I'm sure you will guys, when you are a discussion for next 1 hour, you will learn like how Shri is more learn about cricket and how he's passionate about cricket as well. Yes, Sultan bhai. Yeah, good evening. Yeah, good evening, everyone. Nice to see some old recognized faces. Hi, Micky. How are you, man? Micky, we used to play together in Ramblers before he jumped and moved to Dolphins. But good to see you here. And myself, I've been playing with cricket here for many years in GTA. Currently, I am with the Ramblers and Brampton Pacers. Playing different teams, including BDCL, MCL, and TBCA. I'm very happy and grateful for Farooqi and Max yourself for having me here on the regular basis. And it's always a pleasure to be here. Thank you, Sultan bhai. Ji, Sajjad bhai. It's nice to see that we've got a bunch of guys from Whitby. I also live in Whitby. I played cricket for Ajax Cricket Club and Victoria Park. But I'm also involved with the Ramblers as in their masters. So I played with their masters, the morning league. And I've heard a few of your names here. I know Arman's name. I've heard it a few times क्योंकि हमारे जो है ना जो अच्छे player हैं वो चर्चा करते रहते हैं. They talk about the good players around. So it's nice to see Arman in person. And I know I've played with Micky somewhere. I just love your name. I remember your name somewhere. I just remember you from somewhere. I don't know where we played with each other. It might have been one of the morning leagues or maybe even a friendly. लेकिन आपका नाम मुझे बिल्कुल ज़हन में है. I don't know when we played against each other, but we did once. सही. अब मैं मिक्की की तरफ जाता हूँ. मिक्की को पहले मैं जरा तारुफ करा दूं जी. ये ब्रैम्पटन प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट हैं और मतलब हम लोगों के काफी अच्छे दोस्त हैं. काफी हम्बल. आई मीन वन ऑफ डॉल्फिन मेरा फेवरेट बंदा. अगर डॉल्फिन में साथ में खेलता हूँ इन फील्ड तो मुझे मजा आता है क्योंकि गेम में मजे अच्छी बात भी हो रही होती है, हंसी मजाक भी चल रहा था. और यस वी ऑल प्ले फॉर विन एज वेल. जी मिक्की प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हमें तो पता है. Thank you, Mazhar bhai. Thank you, Farooq bhai, for having me on board. Lovely to see faces here. Sultan bhai, and definitely I played in Ramblers a lot with Sajjad bhai too. I think it was a Masters T25 league that we played, and Arman bhai, obviously, even from we go back a long time because. Even during the coaches, मिक्की उर्दू हिंदी बोल सकते हो. उर्दू हिंदी दोनों ठीक है. मतलब पहले भी हम खेलते रहे क्लब्स, दूसरे क्लब्स में, ब्रैम्पटन मास्टर्स में भी, और कोचिंग भी साथ करते रहे थे पहले. So he's definitely a good guy, knowledgeable guy to be having on board. और एक और बंदा definitely Cash Raw, definitely a Ramblers, big time Ramblers guy as well. So great panel. Thank you for having me on board, guys. ओके बस 2 और लोगों का इंट्रोडक्शन रहता है, फिर मैं अरमान तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ सिडनी टेस्ट के ऊपर. जी कैश प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फारूक भाई. कैश कैन यू हियर अस? Yeah, I can. Can you hear me? Yes sir. Hi guys, sorry, I was just trying to figure out problem with the cameras, but anyways, finally I got connected. Well, thanks for inviting Mazhar first. My name is Kashaw. I've been playing cricket for years in Toronto. I think I've been here for the last 6 or 8 years playing cricket in the IND and BDCL and every other actually aspect of leagues you can talk about. I know a lot of familiar faces over here that people know. Hi old folks. And the people don't know me, actually I just go by Cash. I have official name Akhlaq Rao. I'm from Pakistan, Karachi. I played domestic level cricket back home.
And over here, just Mazhar invited me to just discuss few of the critics over here on the India versus Australia game. Welcome everybody. Let's have fun. Thank you. Yes, Farooq bhai, welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you, Sultan. Hello to everyone. सही. अच्छा अरमान, I think मैं तुम्ही से स्टार्ट करूंगा. Like you can start with कि सीरीज में क्या चल रहा है, थोड़ा फर्स्ट टेस्ट के ऊपर से क्या जो इंडिया की बैट परफॉर्मेंस है उन्होंने ओवरकम किया, और फिर तीसरे टेस्ट के ऊपर आना. थोड़ा सा टाइम लेना, like you can go like 3 to 5 minutes. Well, sorry, can you guys hear me? Yes, जी, properly. Yeah. Okay. पहले टेस्ट में तो obviously, as everyone mentioned, and even obviously the team mentioned themselves, it was just a bad phase, that 1 hour of bad play that India rolled out for 36. It happens on a daily basis, you know, like cricket around the world. Sometimes it's not your day, and you could have things not go your way. And in contrast, same thing, right? If it was their day, they could have ended up making 400 that day, and it would have been a completely different game. So दोनों चीजें होती रहती हैं cricket में, and then the fight back in the Melbourne test was, I think, amazing. Obviously, the bowling has been good from both teams from day one of test one. I think batting has lacked a bit of discipline. People either are not scoring or not looking for scoring options, and they're playing too defensive. But you could see in the third test, the intent has been there from ball one. They had 2 brand new openers come in with Will Pikowski and David Warner coming back, although he was not 100% fit. Yeah. And then Australia kind of just said, you know what, we don't care whether we have a full strength squad. We're going to come back and play the Australian way, which is playing with an intent and playing positive cricket. Yeah, Arman, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे. I mean, do you think कि जो दूसरे टेस्ट में जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, और फिर 2 टेस्ट मैच देखो, पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हुए वो फौरन बैक टू बैक हुए, जो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में आई थिंक 2 या 3 वीक का गैप आया. तुम्हें लगता है कि इंडिया का माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो वहीं रहते हैं, और तीसरा जो रोहित शर्मा का फैक्टर है, तो 2 फैक्टर को तुम थोड़ा बताओगे क्या तीसरे टेस्ट मैच में इंपैक्ट आएगा, या उनके दिमाग में है लाइक वी हैव अ विनिंग कॉम्बिनेशन? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उनको पिछले a year and a half, 2 years से चेंज करें, वो इतने चेंजेस करते नहीं है. Maybe maximum 1 or 2 players, you know, in the middle order, जैसे ट्रेविस हेड पहले आए, फिर लैबिशन फिर बाहर गए, फिर एशेस के बाद परमानेंट मेंबर बन गए, फिर prior to that Smith and Warner were out of the team, so they tried and tested a lot of new people. But over the last year and a half, ever since Warner and Smith have come back, उनकी एक बेस बना हुआ है, तो मैक्सिमम सिर्फ 1-2 प्लेयर ही आगे आते हैं. अगर उनको एक पेसर रेस्ट करना है, वो जेम्स पैटरसन को खिला लेते हैं या माइकल नीसर को खिला लेते हैं, लेकिन उनका जो बेंच भी है वो बहुत स्ट्रांग है, और इतनी वो चेंजेस करते नहीं है. तो आई डोंट थिंक वो माइंडसेट में है कि हम यहाँ पर ही रहते हैं और हमारी टीम है, वर्सेस इंडिया का माइंडसेट. आई डोंट थिंक इंडिया का माइंडसेट भी कुछ चेंज हुआ होगा. दे टुक अ वेरी बिग स्क्वाड, सो आई थिंक 18 to 20 लोगों का स्क्वाड था. Obviously, injuries की वजह से वो squad थोड़ा short हो गया, and based on the current circumstances, you cannot have someone come into the team, wait 14 days and then be added on. रोहित शर्मा की बात अलग है. He's averaged more than 80 or 90, I think, in the last 6 to 10 games that he's played for India. और आपको फिर current form भी देखनी है. Mayank Agarwal last 4 innings didn't get runs, you know, has been having the same problem. Jo commentators भी बात करते हैं उसकी stance की, his trigger movement, and then same thing with Prithvi Shaw. So I wouldn't have made a change in Indian team. Obviously, वो forced changes थे injuries की वजह से. The only thing I may have done would I may have played Natarajan instead of Navdeep Saini, क्योंकि Saini. मैं उस पे आऊंगा जरा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं आता हूं नवदीप सैनी पे आता हूं. मेरा पॉइंट. सुल्तान भाई, क्या लगता है तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है, डू यू थिंक कि इंडिया स्ट्रांग लग रही है? आई थिंक ओपनर के चेंज होने के बाद आई थिंक वो एक गैप था. क्या कहते हैं सुल्तान भाई? लेकिन जिस तरह if you look at what has happened the last 2 test matches, India came back very strong. That basically proved their strength as a team, and the confidence. It's a confidence booster for them, right? You know, first test match, it was like historically they had a defeat, but coming back and winning by 8 wickets,
That's again, you have to admire and appreciate that. Right now, the way the game is going, it can be anyone's game. Both the teams are strong. Both are playing very sensibly. You look at the bowling; they're attacking like they should be. If you see at batting, they're batting very sensibly. The way Smith and the guy played the inning, he just got out though. But see, the scores that they scored, they were not easy scores. They were not easy running. I mean, Correct. it's not easy picking. उन्होंने बहुत अच्छी टाइमिंग किया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स की हैं, बहुत ही सेंसिबली खेले हैं. और अभी इंडिया जिस तरह अटैक कर रहा है और अभी एक विकेट गिरने के बाद अभी it could be in India's favor if they continue to press on it. सही. मैं अभी तुम्हारे और एंश्री बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट लाइक फारूक टू टेक इनपुट बिकॉज फारूक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जरूर होगा जो अभी 2-3 बात हुई हैं. जी फारूक क्या कहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मजा आ रहा है देखने में. अभी एक दो और ज्यादा डिफरेंट नहीं है. आई थिंक द अदर पैनलिस्ट हैव समड इट अप प्रीटी वेल. तो बहुत अच्छी चीज नजर आई. ऑब्वियसली इंडिया गिवन द इंजरीज दैट दे हैड एंड द फोर्स चेंजेस दैट दे हैड टू मेक, एक्चुअली सो कंपेटिटिव हैज बीन वेरी हार्टनिंग. और 36 ऑल आउट के बाद टू कम बैक एंड विन अ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच व्हिच इज ऑब्वियसली अ वेरी हाई प्रेशर गेम, बहुत कमेंडेबल है. इस टेस्ट में जो एक चीज डिफरेंट नजर आई है जो फर्स्ट और पहले वो टेस्ट थी वो ये कि इंटेंट ये बैटिंग में दैट हैज बीन दैट आई हैवंट सीन इन द फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस. एंड आई थिंक दैट कॉन्शियसली एक क्रिटिसिज्म जो मॉन्टेज और ऑस्ट्रेलिया के और फॉर्मर प्लेयर्स उनसे बार-बार यही आ रहा था कि दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि द बैटिंग अप्रोच वाज and the intent in their batting was lacking. So that's something that they've done differently, and you're seeing that मतलब जितना Steve Smith ने आके batting शुरू की थोड़ा सा shaky था, but once he got a few boundaries away, in particular I think पहले 2 टेस्ट मैच में काफी अपने शेल में था. और जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और something that's very different is how India has bowled Australia first 2 test matches. बड़ी बात है, हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, you know, it's often the fast bowlers that, you know, get a lot of credit, but one thing we need to or recognize is actually bowling has been a revelation. मतलब off spinner day 1 of the test match में पहले सेशन में आके बॉलिंग करता है and then he gets the top order wicket. Did it in the first something that is what amazing to see frankly, because आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जहाँ पे बड़ी हार्ड विकेट होती है, don't often come in the game till day 4, day 5, sometimes day 3, but अश्विन ने पहले टेस्ट day 1 पहले सेशन से आके जिस इंडिया को से कंट्रोल दिया जो कि ऑफ स्पिनर आपको टिपिकली कंट्रोल देता है, इज आल्सो रियली बिग. आई थिंक दैट इज डिफरेंस विद द टीम. अभी मैं तुमसे स्टार्ट करवाऊंगा. नो कोहली, रोहित शर्मा इन एंड नवदीप सैनी. आई वांट यू टू लाइक गिव सम लाइट इन 3 फैक्टर्स के ऊपर. नो कोहली, रोहित शर्मा इन, नवदीप सैनी. So I think the difference with हिंदी में कर लो बात. आई थिंक मेरे बहुत सारे लोग देखने वाले हम लोगों की लैंग्वेज में है, तो आई थिंक उनके लिए इजी होगा तुम्हारी बात को समझना. तो इंडिया ने तो रियलाइज कर लिया कि वो अब विराट कोहली जो है नहीं उसके बारे में रोके कोई फायदा है नहीं, राइट. एंड पास्ट इंडियन टीम्स इफ आई लुक एट लाइक जब पहले जाती थी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया, तो उनका जो खेलने का तरीका होता था और करंट तरीके में बहुत फर्क है. एंड द डिफरेंस इज मेरे हिसाब से देख टू थिंग्स, राइट. पहले जो इंडियन टीम जाती थी वो बैटिंग हैवी जाती थी. उनका ये होता था कि जो हमारे अच्छे बैट्समैन हैं वो जितना रन बना लेंगे, एंड दे वर होपिंग यूजुअली कि सामने वाली टीम जितना बनाएगी होपफुली हमारे सचिन, हमारे राहुल द्रविड़ उससे ज्यादा उसको कवर कर ले. बॉलिंग हैज नेवर बीन द स्ट्रॉन्ग सूट ऑन द इंडियन टीम, राइट. जो पहले टीम जाती थी वो इट ऑलमोस्ट ऑलवेज वाज कि निकाल ले 20 विकेट निकालने में उनके छक्के छूट जाते थे कि 20 विकेट निकल जाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में. द करंट टीम इज टोटली डिफरेंट. अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम और इंडियन टीम देखो, ये दोनों बॉलिंग हैवी टीम्स हैं. इन दोनों का जीतने का एक ही जरिया है, वो दोनों की बॉलिंग की तरफ से है. दोनों एडिलेड में भी वही हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग अच्छी गिरी तो उन्होंने वो जीता, और जो पिछला हुआ एमसीजी में उसमें इंडियन बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग थी. तो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो सीरीज है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉलर सीरीज कंपेयर्ड टू अ बैट्समैन सीरीज. तो इसमें विराट कोहली का ना होना obviously it makes a difference, but I think what makes a bigger difference is कि how good the backup resources are for bowling for India, क्योंकि जिताएंगे bowlers ही
और बैटिंग में तो देख रहे हैं कि दोनों टीम्स की वही हाल है कि दोनों टीम्स के जो बैट्समैन है, दे हैवंट बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। श्योर या जैसे कि पहले जो टीम में हुआ था, लाइक लोग उसी का वो 1 घंटे की बात करते हैं, राइट? सो व्हेन यू लुक एट दी टेक्निकलिटीज, राइट, हर मैच में ज्यादा क्या होता है कि बंदा जो है वो 2-4 बॉलें मिस करता है, नहीं लग रही है, एज लगती है। उस 1 घंटे में ऐसा हुआ कि जिस बंदे ने बॉल मिस की उसकी एज लगी ही लगी। हर बंदे का जो कंट्रोल नॉन कंट्रोल शॉट होता है, जो परसेंटेज होता है, बाकी मैचेस में क्या होता है कि बंदा 2-4 बार ट्राई करता है, नहीं लगी, लकीली एक आध लग गई तो कैच हो गया, नहीं हुआ तो कम से कम वो कुछ बना लेता है। उस 1 घंटे के दौरान ये हुआ कि जिसने भी मिस्टेक की वो मिस्टेक में एज लगी, एज कैच हुई और कोई भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ। तो वो जैसे होता है ना कि सारे स्टार्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं कि एज भी लग रही है, पहली मिस्टेक पे कैच भी पकड़ा जा रहा है। तो 1 घंटे के अंदर वो सातों के सातों जो मिस्टेक थे वो पकड़ लिए गए। सही। देखा जाए तो एमसीजी में ऐसा नहीं कि इंडियन बैट्समैन ने कम गलतियां नहीं की, कैचेस इनके भी ड्रॉप हुए, एजेस उनके भी गिरे, राइट? बट फर्क ये था कि इस टाइम पे उन्होंने कैचेस नहीं पकड़े और उन्होंने कैपिटलाइज किया और उसको उल्टा ऑस्ट्रेलियन टीम ने कैचेस ज्यादा छोड़े, राइट? उसका उनको भुगतान करना पड़ा कि जी। सुल्तान भाई एक बात, सज्जाद भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आप ये मुझे बताइए, जो ये बात कर रहा है, जैसे अभी बात कर रहा है कि 1 घंटे में हुआ, मुझे नहीं लगता जो एक टेस्ट पहले टेस्ट मैच में हुआ, जब इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीता, उस दिन से आज तक nobody is talking about 36 run inning. I think we overcome, right? Because the Indian team shut everybody's mouths up. That's the way you come back from a bad game. अब लोग कह रहे थे कोहली नहीं है, मुझे तो वो टीम बेहतर लग रही है कोहली के बगैर. They're playing more relaxed. Correct. And people, तो let me go back to another thing. फारूक भाई ने बड़ी जबरदस्त उस दिन बात की थी. Let's go back in history. Abhi also just said something. Let me impress you guys with my knowledge of Indian cricket. They in 2003-4, I think it was a 3 and 4 that they had one of the best series that I've ever seen, Australian tour, and they did exactly जो अभी भाई ने बोला है कि जितने वो 500 बनाएंगे हम 700 बनाएंगे, वो वाली स्ट्रेटजी थी. लेकिन इन द एंड वो जीत नहीं सके सीरीज. तो ये रिसेंट टाइम्स में आए तो कोहली का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि टू लीड द टीम टू बीट देम. लेकिन उसके साथ एक एस्टेरिस्क है जो 2018 की सीरीज विन है, क्योंकि वो बैंड थे उनके 2 अच्छे प्लेयर. ये गोल्डन चांस है वो एस्टेरिस्क रिमूव करने का. एंड आई बिलीव कि इन सम वेज वो जो नहीं था कि एक जमाने में होता था कि पाकिस्तान जब सबसे ज्यादा बुरा हारता था तो उसके बाद बड़ा अच्छा कमबैक करता था, तो इंडिया वो कॉर्नर टाइगर्स वाली फिलॉसफी लेके उसने मेलबर्न में विथ नो प्रेशर नो टेंशन खेला है और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. आई गेव देम नो चांस आफ्टर दिस. सेकेंडली मुझे एक और चीज का मजा आ रहा है कि 2018 में पुजारा पे बहुत डिपेंड किया, ठीक है ना. पुजारा ब्लंटेड द बॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड पुजारा ऐसा बंदा है, ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर हु टाइम मशीन में जाके किसी बंदे को 60s या 70s के बैट्समैन को लेके आए हैं, ठीक है ना. हमारे एरा का नहीं लगते वो, लेकिन पुजारा के बगैर ही वो इतना चल रहे हैं, इतना ज्यादा. आई गिव इंडिया नो चांस इन दिस सीरीज टू विन, लेकिन राइट नाउ माय ओपिनियन हैज कंप्लीटली चेंज्ड द ऑपोजिट. बस ये है कि अब ये आज तो स्टीव स्मिथ सेट हो गया. एज लॉन्ग एज दे कीप गेटिंग स्टीव स्मिथ चीपली, इंडिया विल विन द सीरीज. Okay. I think Ashwin versus Smith is the key battle in the series. Before I go to Shri, I want to take some comments quickly. Okay. Asad Malik ne join kiya. Arshad Malik, I think Assalamu alaikum. Wicket has been fallen. Yes, I think Labuschagne is gone. That's good. Okay. And my next comment is Arman Kapoor is dead for you. Tahali, glad to see you watching this stream. Thank you Tahali. आप अरमान कपूर को देख रहे हैं, काफी दिनों से आपने देखा नहीं है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. मुदस्सिर हुसैन विटबी से, सॉरी आई वाज सपोज्ड टू जॉइन. जी आप नहीं आए, आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं डेफिनेटली. ओके. अरमान अमीर हमजा कह रहे हैं अरमान गुड टू सी यू. अरमान ये तुमने लगता पेड लगाए में. मैं सब बता दूं भाई, जितने कमेंट कर रहे हो कोई भी सीजन फीस में डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, तो यू जस्ट वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू मैन. ओके. मैं कंट्रोल भी नहीं करता सीजन फीस बाय द वे. देख ये देखो फरजान मुलजानी, फरजान ये देख लो, अरमान इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी सीजन फीस इश्यूज. ओके. अरमान मैं कंट्रोल नहीं, मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हुई नहीं. ओके. अदील अहमद कह रहे हैं 36 guests on the show tonight. Yes, move on. जी let's move on to Shri. Yes Shri, Sajjad gave a good explanation why we not talking about Kohli, why we not talking about 36 runs inning. What do you think about India in third test match? I mean, I think they did a great job by bouncing back in Melbourne. See, there's no point thinking about what had happened, right? That's 36 is history. And the key thing in the Melbourne Test match was even when we lost to Umesh Yadav in the second innings,
the bowlers never gave up. They never even, I think Mohammad Siraj made a point like that they never even discussed about, hey, we are shot by one bowler. Whatever resources we had, we bowled. And I think the biggest reason for our win with Mohammad Siraj bowling was like Correct. impeccable luck. And I mean, obviously during the COVID time, I was going through one of the interviews of Javagal Srinath where he said Indian team never had two or three fast bowlers on deck. So his complaint was like he was always overboard. And that was one of the reasons why even when we had great batting lineups with Sehwag or Gambhir or Dravids or the Tendulkars, we always struggled to win whether in South Africa or whether in Australia because we never had those resources. The bowlers win matches. So this is probably the first time we had like two, three fast bowlers. So I think like the key thing right now in Sydney is like it all depends on how soon we get Australia out, and then we have to India has to bat as long as they can in this first innings. Sure. So if they fail in the first innings, then it's going to be immense pressure for them to make a comeback in the fourth innings, and batting fourth innings is never going to be easy. Yeah. Sure. Okay, Micky, unmute करना please अपने आप को. Micky, क्या समझते हो? Ashwin is playing a critical role in this, like a leading from the front. और या बुमराह का मुझे फैक्टर नजर नहीं आ रहा. क्या समझते हो? Ashwin is playing a good factor in this winning team. Definitely Ashwin, and it's basically Ashwin versus Lion at the moment, I think, in the series, because whoever takes the most wickets, I think their team will be ahead. Bumrah ka season thoda up and down रहा है because he had to battle with injuries. Even in the IPL we saw कि कभी कभार वो पूरी तरह से full throttle में नहीं ball कर रहे थे. So I think with fast bowlers कभी कभार होता है ऐसे, and obviously with Umesh down as well. Siraj has definitely picked up his game. Saini को आप देख लें कि वो भी काफी मतलब strong लग रहे हैं. But depending on how Ashwin does, that's how the team will perform. You have to take 20 wickets to win a test, but bowlers are, मैंने देखा है कि bowlers only can create those chances. You got to pick those catches up. जो आपने run out miss किया था, Pant ने जो drop किए थे yesterday. So those can be critical. But depending on how Ashwin does, this series will basically go ahead. That's the way I think. मैं अरमान फारूक ये मैं मैक्स एक सवाल कर सकता हूं मैं? जी सर. मैं कैश और फारूक दोनों से दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूं कि ये पहला टेस्ट फिर दूसरा टेस्ट बड़ा एटीट्यूड के डिफरेंट है, राइट? इंडिया डाउन हुआ पहले में, सेकंड में बड़ा भरपूर आया, तो ये इतना एटीट्यूड के डिफरेंस जो है वो 4 दिन के गैप में किस तरह लेके आई टीम्स? कैश कुछ बताएंगे आप, और फारूक आप भी? Cash, you need to unmute. Yeah, sorry, Farooq bhai, actually I couldn't hear you very well. You were breaking for me. अच्छा ठीक. Can you repeat the question again? क्वेश्चन ये था कि जो पहला टेस्ट हुआ और दूसरा टेस्ट हुआ उसमें एटीट्यूड का बड़ा डिफरेंस है इंडियन टीम के अंदर, राइट? पहले में बिल्कुल मोरल डाउन हुआ, लेकिन दूसरे में बहुत ज्यादा बाउंस बैक किया. तो क्या ऐसा लाइक उनके सिस्टम में क्या है? हमारी टीम में पाकिस्तान के भी मैचेस हो रहे थे कि वो तो जब डाउन हुए तो डाउन ही रहे. तो ये जरा मैं क्विकली छोटे से 2-4 वर्ड के अंदर yeah, so I understand that. Yeah, I got the point. I mean, we cannot compare apple to oranges. You have to compare apple to apple. There is a huge difference in the talent wise at this point in the both teams. Okay, sorry. Yeah, living in Toronto, man. Okay, no worries. तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तानी टीम it's again like I mean of course there are some senior players in there, but definitely it's a development team. We got a lot of raw and young talent at this point. तो ऐसे कंपेयर करना इंडियन टीम के साथ तो आई थिंक probably fair नहीं होगा. लेकिन इंडियन टीम जो है of course it's solid team. It's like we're talking about India and Australia like top 3-4 teams. They fall in the top 3-4 teams. So जो इंडिया का जो फर्स्ट एक्चुअली टेस्ट में जो ऑफ कोर्स जो ड्रॉबैक हुआ था, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं एक्चुअली मोस्टली मैंने जो है उसको ब्लेम जो है वो इंडियन टीम के ऊपर नहीं किया था. मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन था वो इट्स मोर एक्चुअली इन्वायरमेंट दे वर इन. ऑफ कोर्स यू नो कमिंग टू डिफरेंट कंट्री और मोस्ट ऑफ द टाइम जो साउथ एशियन टीम्स होती हैं फॉरेन कंट्रीज में जब जाके खेलती हैं तो फर्स्ट टेस्ट थोड़ा सा सोचा ही होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैवलिंग, ऊपर से क्वारंटीन वगैरह.
ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा और जो प्रॉब्लम एक्चुअली जो मेन फैक्टर जो मुझे लगा एक्चुअली बॉल भी थी, वो पिंक बॉल जो है वो बहुत ही डिफरेंट बॉल थी थोड़ी सी, एंड मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट फेयर एक्चुअली इन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कि मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियन टीम के पास ज़्यादा जो है वो ओवर्स हैं practice with the ping ball on those pitches and stuff, where Indian teams kind of lack into it, and looks like Indian batsmen mostly ping ball playing like they could not see anything, they were playing like blind. और आई मीन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन टीम एज वेल, जो जिस तरीके से उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, जिस तरीके से उनको फिगर आउट हो गया है कि ये बॉल के अंदर जो इंडियन बैट्समैन है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है उसको खेलते हुए, तो व्हाई डोंट वी एक्चुअली जस्ट डू द बेसिक्स एंड दे जस्ट सिंपली मेंटेन द लाइन एंड द लेंथ ऑफ द बॉल। जिस तरीके से जो है क्या कहते हैं जॉस ने उसने बॉल की, दैट वाज लाइक अ ब्रिलियंट, लाइक आई मीन ही हैड टू मेक देम प्ले. So what the bounce back of the Indian, that's actually natural. That is not a bounce back. I would say that's what the real natural team is playing. Of course, the first actually test के अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था और थोड़े से अनलकी भी रहे. Of course, एक के बाद एक कैचेस निकलते रहे, हम कैचेस पकड़े भी जाते रहे. That's pretty good actually. ड्रॉप भी नहीं हुए. तो of course होता है जब ऊपर से इतना प्रेशर हो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन that they have proved themselves that they are really actually a real team. I mean, they bounce back with what? Like, I mean, they know they have the batting lineup up to 7 to 8. They can always actually play. They can always stay at the wicket. They can actually show what the talent they have, and that's a big difference. Where the Pakistan, of course, we are missing. We have lack of a talent. There is a no comparison. पाकिस्तान के ऊपर अभी सीरीज हमारा फैक्टर है. मैं चाहूंगा फारूक से लूंगा. फारूक, क्या समझते हो बॉडी लैंग्वेज में यार इम्प्रूवमेंट? मेरे ख्याल है दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो क्रिकेट में ही नहीं, जनरली आई थिंक जब एक एडवर्सिटी होती है टीम के लिए, तो सम ऑफ द टीम्स दैट हैव स्ट्रांग कैरेक्टर दे रियली कम बैक स्ट्रांग. और आई थिंक किसी ने अभी पैनल में कॉर्नर टाइगर वाली बात भी की थी. बहुत सारी मतलब इंडिया में वो क्वालिटीज नजर आई कि दे रियली केम टुगेदर एज अ टीम एंड टर्न देयर परफॉर्मेंस अराउंड. जो हमने अभी तक बात की है इस वक्त अब तक, वो ये कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है बहुत ही अन ऑस्ट्रेलियन जिस तरह ये होम सीरीज में ऑपोजिशन डोमिनेट करते हैं या कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अटैक करें. दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन वेरी अन ऑस्ट्रेलियन. आप देखें कि उन्होंने एक मेकशिफ्ट ओपनर खिलाया मैथ्यू वेड, जो मतलब आप अगेन पाकिस्तान और इस तरह सबकॉन्टिनेंट टीम से यू कैन एक्सपेक्ट दैट, बट फॉर अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया दैट हैज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम दैट वाज प्रेजेंटली फारूक आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा. सॉरी, आ रही है मेरी आवाज? जी अब बेहतर है. शायद थोड़ा सा करीब आओ तो शायद आई थिंक आवाज. नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी एक अन ऑस्ट्रेलियन अप्रोच से खेला है ये समर, इनका जो होम समर है, जो उन्होंने सिलेक्शंस किए हैं एक मेकशिफ्ट ओपनर खिला के, और ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा. और इवन देयर अप्रोच और आई थिंक जो टर्न अराउंड था फर्स्ट टेस्ट, आई थिंक वन थिंग दैट रियली हेल्प्ड हियर वाज दैट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बहुत नॉन रेगुलर ओपनर. इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई फर्स्ट में, सेकंड टेस्ट मैच की, उनको 195 या 200 पे ऑल आउट कर दिया. आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड. इंडिया स्ट्रगल्ड विद द बैट इन द फर्स्ट टेस्ट. इन द सेकंड टेस्ट the batting wasn't that great, it's actually the bowling the one test. So मेरा ख्याल है the fact that उन्होंने आई थिंक फारूक बिल्कुल तुम्हारा डार्क हो गया कैमरा. अरमान, मैं फारूक की बात से तुम्हारे से सवाल करूंगा. फारूक, अकॉर्डिंग टू फारूक वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियन नजर नहीं आ रही, दैट्स व्हाई इंडिया परफॉर्मिंग वेल. मैं ऐसा समझा कि डू यू एग्री विद हिम, और या इंडिया ने अपना ट्रू कलर्स दिखा रहे हैं? नहीं, सॉरी, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया मतलब ऑब्वियसली इंडिया को क्रेडिट दें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट मेरा ख्याल है एक बहुत मेजर फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस. ओके, लेट्स टेक अवे फ्रॉम इंडिया. शॉर्ट, मैं ऊपर के जो अरमान, अभी और शिरी, आई वांट टू टेक ऑल थ्री ओपिनियन ऑन हिज कमेंट. स्टार्ट फ्रॉम अरमान. जी अरमान. तो पहला पॉइंट ऑब्वियसली, as I mentioned previously, Australia ne, I don't think they played their best cricket. Even like the two games, even the game that they won, they didn't play their best cricket from a batting unit. और वो दोनों sides का same चीज़. I think that's been the mutual thing in both India and Australia, that their batting has lacked intent and discipline. आप देख लो 5 innings हो चुकी हैं और सिर्फ अभी 100 हुई है. From both teams, and that's Ajinkya Rahane. He's the only one who made 100 so far. And usually, when you play higher level cricket, they usually tell you, they're like, one person out of your top 4, top 5 needs to bat and get a big 100 out there, and everyone else bats around you. So अगर आप second match का भी देखें, although Ajinkya Rahane made 100, Vihari's contribution kind of laid the platform for Jadeja to come in and then make those runs, although he only made 20 odd or 30 odd.
So I agree with Farooqi that they lacked intent, but I think India also lacked intent, not just Australia. And दूसरी point I would like to point out, India really came and built more leaders in the second game. I personally think Virat Kohli is the best player in the world, but Correct. I also think that his captaincy is a bit more intimidating, where people lack some sort of fear that they don't want to come out. आप जैसे second match में देखें, you saw Bumrah emerge into a leader. He guided Siraj. You also saw Ashwin turn into a leader. Lead from the front. And that doesn't have to be that they're not fighting against Australia. It's basically within the team that just showing the way that this is what it's done, and it's fine. अगर आप देखें second match में approach ही different थी कि एक obviously captain तो रहाने था, लेकिन बहुत सारे captain थे field में, चाहे वो पुजारा होए, चाहे वो अश्विन होए, चाहे वो जडेजा होए, चाहे वो, because you're playing with two new guys. Two new batsmen. Even I think Shubman Gill also performing. मैं अभी तुम्हारा comment लूंगा. अभी do you think अजिंक्य रहाणे will be the new face of the Indian Test team, और जब कोहली आएगा तो automatically आ जाएगा? I mean है उसके अंदर जरा रहाणे का बताओ, back home की domestic में करता है क्या captaincy? So I think Rane ka, it's an interesting case. Like, he comes from Mumbai, right? And just to give some history, like in the Indian first class history, if you see, the Mumbai team has always been the Ranji team, has been the team with the highest number of wins, right? So he comes from that class of batting, which is typical Mumbai batsmen are called khadus. And what khadus का मतलब ये होता है कि वो बंदा अपनी विकेट नहीं देता. उसका है कि जीतना है, चाहे जो करके झेलो, टांगे तुड़वाओ, बट जीतना है. और इसी बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में झंडे गाड़ के रखे हैं कि आई थिंक इन द लास्ट 60-70 years they have won like 80 to 90% of every Ranji trophy. Oh. And the reason has been because Mumbai has always been a powerhouse in batting. So you have the Vengsarkars, the Gavaskars, now Rohit Sharmas and the Tendulkars, everyone coming from that Mumbai side of the batting, right? जहां तक सवाल वापस आने का है, I think in the Indian team, I think it's pretty well acknowledged कि जब आएगा Kohli आएगा, he'll be the captain. Until then, everyone is just stepping up, saying we need to fill in the breach, get up and like शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है. And I think for me personally, I think I'm noticing a couple of things, right? Having followed the Australian cricket, one is it's desperate times. अगर आप इतने desperate नहीं हो, तो आप अपना जो batsman who is not 100% fit, why would you play him? Why would you take the chances कि वो बंदा पता लगा injured हो जाए, अगली 2-4-6 महीने के लिए बैठ जाए, right? But it's desperate times. They are realizing कि अगर हम इस बंदे को नहीं लाए, तो there is a very distinct possibility कि हम ये सीरीज हार जाएंगे. कल जब वो बंदा बैटिंग को आया था, you can obviously see he was not able to run properly. But वो आया because he wanted to show like it's desperate time. I need to come up for the Australian team and stop this downslide. So this shows कि it's not the same Australian team जो पहले आती थी कि Asian teams आए तो जो उनकी existing team है वही खेलेगी. एक डिफरेंस ये काफी हुआ है. So it shows a change in mentality. The other thing, I think what has helped India tremendously is IPL. अब मैं उसका ये इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप देखो जैसे इस सीरीज में है कि there were so many injuries. So second line के बॉलर्स को लेके आए, सिराज को लेके आए, नवदीप सैनी को लेके आए. But the difference is Siraj and Navdeep Saini are already teammates with all these Australian players in their IPL teams. In the IPL leagues, yeah. पहले क्या होता था कि जब बंदा जाता था इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तो वो वाव फैक्टर होता था सामने, अरे ऑस्ट्रेलियन बंदा आ गया सामने, राइट? ये पहली बार उसको देख रहे हैं, डेविड बोन आया, ये आया, तो वो लाइक यू फेल्ट इंटिमिडेटेड, राइट? कि उस बंदे से आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो डायरेक्ट फील्ड पे आता है और आपको ऑस्ट्रेलियन वे से आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, एंड दैट प्लेज साइकोलॉजिकली. यहाँ पे वो फैक्टर नहीं है. उस बंदे के साथ उसने 3 महीने बिताए हैं. Most likely he has been having dinner and everything with him, has been playing, he knows what his good shots are, he's bowling in the nets most likely to that guy. तो वो जो intimidation factor जो पहले होता था, it's not as much, and that goes credit for the IPL because now they are much more familiar with these guys. Familiar. मैं एक मिनट अभी मैं जरा सुल्तान भाई से पूछूंगा. सुल्तान भाई, जो इसने अभी ने बात करी वार्नर की कि वार्नर इंजर्ड नहीं था और वो खेल रहा है, डू यू थिंक अगर यही पाकिस्तान या इंडिया करता सिलेक्शन तो पूरा मीडिया तो बैश करता कि भाई हाउ कैन यू लाइक पिक अप प्लेयर इवन इफ ही इज द स्टार्ट? जी सुल्तान भाई. आई थिंक इंडिया की मैनेजमेंट बोर्ड और मैं वार्नर के बारे में पूछ रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि
जिस तरह ये भी इनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आना चाहिए था, इसी तरह इनके ऊपर भी आना चाहिए था। उन्होंने परफॉर्म पहले में नहीं किया था इंडिया ने। और वार्नर की जो आप बात करें, इन सब के जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। यहाँ पे इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली शुरू नहीं करते नेगेटिविटी, वो पूरा जो अपने एसेट्स हैं, एसेट इन द सेंस जो क्रिकेटर्स हैं, हीरोज हैं, उनको वो उनकी प्रोग्रेस में उनकी पूरी हिस्ट्री को लेके कमेंट्स करते हैं, जज्बाती नहीं करते। वार्नर की डेफिनेटली अभी स्ट्रेंथ तो है, उसकी प्रेजेंस भी है, वो लेफ्ट हैंड ओपनर भी है, वो डेफिनेटली बहुत सी स्ट्रेंथ लेके आता है अपने साथ। स्मिथ जिस तरह है, इन दोनों की कमबैक और ये गेम और किसी भी लेवल से विन करवाते हैं। ये बड़ा मैच है, तो हमारा और उनका कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर सकते। हम वार्नर की बात कर रहे हैं जो कि सेटल्ड ओपनर है हर फॉर्मेट में ना। तो हम अब उसके इंजरी ठीक है, ही हैज रिकवर्ड डेफिनेटली, दे हैव प्रोटोकॉल्स, दे गो थ्रू इट, they get the clearance sign off from their physio, only then they can come. So I think that process has been followed, right? So Sure. the criticism की तो बात नहीं आती है। सज्जाद भाई एक बात बताइए, इंडिया को अब मैं अब आ रहा हूँ टेस्ट मैच के ऊपर। मेरे जो नेक्स्ट 20-25 मिनट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट ओनली थर्ड टेस्ट मैच। हो गई काफी जनरल बातें। थर्ड टेस्ट मैच, व्हाट इज लैकिंग बिहाइंड इन इंडिया? क्या इंडिया ने पहला दिन जो परफॉर्म किया वही करना था, या थोड़ा सा 56 ओवर्स में उनको कम चांस मिला? इस दफा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लान था ना इंडिया का, इट गॉट डिस्ट्रप्टेड बाय द रेन थोड़ा सा। मतलब अप एंड डाउन, ऊपर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। और इस दफा स्टीव स्मिथ ने थोड़ा सा स्टैंड दे दिया, तो उससे थोड़ा फर्क आया। दूसरा ये वो जो नया लड़का है, व्हाट इज नेम, जो व्हाट्स हिज लास्ट नेम, किसकी बात कर रहे हैं? जो एक नया लड़का है लंबे बालों वाला, उसके दो कैच छूटे हैं। उसका वो पहले वाला या दूसरा अश्विन का हाँ, एज हुआ था और हाँ, क्योंकि वो फिर अश्विन की बॉलिंग ही फर्क होती है उसके बाद, क्योंकि अश्विन को अभी तक नई नई जल्दी जल्दी विकेटें मिल जाती हैं। पहली एक आध विकेट वो फिर बड़े कॉन्फिडेंस से कराते हैं। और टू मी दैट्स बीन द की इन द सीरीज सो फार। ऑस्ट्रेलिया को दबाने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं स्मिथ और वार्नर पे। तो वार्नर तो इंजर्ड है या अवेलेबल नहीं है, तो स्मिथ को उन्होंने बार बार आउट किया है। एंड आई फील लाइक अश्विन केम टू द सीरीज विद अ प्लान, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट एशेज में भी स्मिथ ने कैरी किया था उनको, तो इस दफा वो कैरी नहीं कर पा रहे। और पिछले कुछ सीरीज में स्मिथ और वार्नर ही बहुत स्कोर करते हैं, और लबुशेन तो कर ही रहे हैं। तो तीन बैट्समैन अगर आपके अच्छा खेल रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब इस दफा लेकिन अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बेहतर खेल रहा है, एंड दे ब्रोक द रिदम ऑफ द इंडियन बॉलर्स। वो उन्होंने उनको वो करने नहीं दिया। अब आपको तो पता है, मैं तो दुआ कर रहा था कि ड्रीम स्टार्ट होगा सिराज का, मैं तो बड़ा उसका फैन हूँ। मैं पहले ही कह रहा था सिराज पकड़ लेगा सबको, लेकिन इस दफा उन्होंने काउंटर किया। अच्छा, सिराज के टैक्टिक्स को काउंटर किया। दे सीम लाइक दे वर रेडी फॉर हिज इनकमिंग बॉल एंड हिज टैक्टिक्स ऑन द लेग साइड। बिकॉज इसके ऊपर मैं एक पॉइंट करूंगी, ये बहुत लॉजिकल चीज है कि वास्की ने ना उसको काउंटर इसलिए किया। अगर आप उसके देखें, वो अपना जो गार्ड लेता है लेग स्टंप से बाहर लेता है, he shuffles twice. Yes. The first shuffle it comes towards middle and off, और by the time he plays does the second shuffle जिसमें वो बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाता है। तो बेसिकली इसमें ये एनकाउंटर कर रहा है चांसेस ऑफ LBW। और लेकिन सिराज भी बहुत अच्छी फोर्थ स्टंप से वो he makes just enough swing to make him commit to that ball। वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा काउंटर कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना, जिस तरह वो कहते हैं अश्विन और स्मिथ, इस तरह सिराज और पुआंस्की का जो है, ये मुझे सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इसका नया नाम है। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छी बैटल लाइन सब वो तो आई थिंक फारूक हैव टू लीव इन क्विक मिनट्स। फारूक, मैं क्विकली तुमसे आखिरी नोट्स लूंगा इसके ऊपर। क्या समझते हो थर्ड टेस्ट मैच? किसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू विन एंड इन फॉर फोर्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच? तुम म्यूट हो फारूक। I think दोनों टीमों के लिए फर्स्ट इनिंग्स बहुत क्रिटिकल है। SCG is typically turns on the fourth and fifth day, so I think whatever team is behind the game in the fourth and fifth day, they'll struggle to come back. So I think first innings इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करें। और मतलब जल्दी कितना स्कोर? 20 में से अभी बारिश से ऑन एंड ऑफ है, तो ऑब्वियसली बैट्समैन के लिए बहुत अनसेटलिंग होता है, तो दे हैव अ गुड चांस। अभी नई बॉल भी 6 ओवर में आने वाली है, तो आई थिंक ये जो पीरियड ऑफ प्ले होगा बारिश के बाद विद न्यू बॉल, वो बहुत क्रिटिकल है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को ये 350-400 तक आउट कर लें एंड देन दे कैन पोस्ट अ बिग फर्स्ट इनिंग्स टोटल, आई थिंक
India's perspective, it's very important that they're chasing less than 200 runs on in the fourth innings, because again SCG एक ऑस्ट्रेलिया में शायद वाइड स्पिन होती है, तो नेथन लायन को खेलना काफी मुश्किल होगा इंडिया के लिए फोर्थ इनिंग्स में. Sure. Okay, let's move on to Shri. Shri, what do you think? Is India is confident enough in third test match right now? And do you think that rain will play a more factor in this while before, like more than the India and Australia? Farooq, if you want to leave, you can leave, sir. See you tomorrow. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. No worries. Yeah. Thank you. Sorry, you were saying which factor? I missed rain that. Factor. The factor of the rain right now in this test match. I think, I mean, yesterday there was no forecast for rain, but then it did show up. So it's kind of difficult to say whether there's going to be rain or not in the next few days. But if there is rain, then obviously it's going to impact both the teams, whether it's India or Australia. Rain just stopped the game as well. Right now. Yeah. So, Shri, what do you think? If rain keep playing, do you think that when Ashwin comes, like he's playing a good role in, because Australia needs to get out within 350 in order to make this result, right? Because if Australia score 400, then I think test match is going to draw. What do you think? I mean, if you're not able to get them under 400, then we have to really bat like as long as we can. And then if there's going to be rain, obviously there's going to be less overs bowled. So which will eventually pave way for a draw. So, but then the key thing is like it's very difficult to think beyond what is going to. I mean, you have to take session by session. I think for India right now is to, in the next couple of sessions, try to get as many wickets as possible and bat as long as they can on the third day and into the fourth day. And then depending on how it goes, then they can plan. But it's because with the weather being a factor, it's difficult to say like what will happen right now. मेरे एक सवाल है मिकी से. मिकी यार, ये स्टीव स्मिथ को लग रहा है जो है ना वो काफी इंडियन ने कुछ बोला है, क्योंकि वो बड़े फुल फेटे के मूड में आज. तो क्या लगता है तुम्हें, स्टीव स्मिथ को ठीक ठाक फेटा देने वाला है इंडिया को? मुझे लग रहा है कि आई थिंक स्टीव स्मिथ को 2-3 इनिंग्स, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं उनको 2-3 इनिंग्स अगर डाउन हो जाए तो तीसरी चौथी इनिंग्स में तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक करते हैं. और स्टीव स्मिथ ने यही काम किया. आई थिंक ही इज लुकिंग गुड. एक मैं पोकॉफ्स्की के बारे में बात करना चाहूंगा. उसकी टेक्निक में बहुत सॉलिड लग रही है. तुम्हारी तरह के हैं थोड़े मिकी? नहीं, बस वो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते. मतलब सिर्फ अरमान ही सही लग रहा है, बाकी सब हम ऐसे ही लग रहा है. मेरे बालों के बारे में कुछ नहीं कहना, कल नहीं बुलाऊंगा. नहीं, बिल्कुल. स्टीव स्मिथ is one of the greatest players obviously in the game right now. जैसे वो खेलता है, उसकी टेक्निक बहुत ही डिफरेंट है. But his head is always above the ball, on top of the ball, and that's why he scores runs. And his mentality is so amazing. Definitely a good batsman to have on your team. So basically, मैं ये कहूँगा कि I think जो ये बात हो रही थी कि day 4 में spin जो होगा ना, वो I think crucial होगा Lion और Ashwin के लिए. Hopefully we can get them out earlier than 400. And that way we can bat less in the fourth innings. जितना less target होगा fourth inning में, at least अगर 250 भी chase करना पड़े तो it could be a hard task for India. Okay. Ji Sajjad bhai. A couple of quick things. Number one, Arman bhai, highest score on the lowest score on those high scoring tours India first innings 445 या 400 कुछ था. अब हम सोच रहे हैं 400 से ऊपर हो गया तो क्या करेंगे ना. Secondly, you don't want to lose. Brisbane is like Australia कराची है, जिस तरह हमारा कराची होता था एक जमाने. उधर नहीं हारते ऑस्ट्रेलिया वाले. चलो नहीं हारते. कैश कराची की बात करिए, थोड़ा सा अनम्यूट करो. और भाई बालों की बात मत किया करो. कैश और फरूक भाई बैठे हैं, बुरा मान जाते हैं भाई. हमने कैश अनम्यूट करो. कैश क्या समझते हो यार, मैं आपसे मुझसे सवाल करता हूँ, आवाज खराब हो जाती है. नहीं कोई नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ मैं, आवाज ही नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज इनको? आवाज कट जाती है. ओके चलो आप बताओ. नहीं, मैं आई हैव अ क्वेश्चन कि तुम्हें क्या लगता है तीसरे टेस्ट मैच में क्या चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया? डू यू थिंक कि कौन सी टीम लग रही है कि अभी तो बहुत अर्ली टू से है, लेकिन क्या समझते हो पहली इनिंग में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडिया के? कितने में रिस्ट्रिक्ट करें ऑस्ट्रेलिया को? I don't think he heard you. He's not hearing it. Token problem. जब तक एक दो कमेंट चले आप ले लें, फिर मैं अरमान की तरफ आता हूँ स्टीव स्मिथ के ऊपर. एक्चुअली
If you can hear me. Okay, so I don't know. Can you guys hear me? Yes. Now we can. Yeah. So basically, I mean, so far there is only a weak link at this point. अभी तक जो नजर आया था इंडिया टीम में वो बिहाइंड द विकेट था इंडियन टीम में वो जो कीपिंग में थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम था ऋषभ जो है वो क्या कहते हैं उसने दो जो है ना क्विक एक के ऊपर एक कैचेस ड्रॉप किए पुको के which is actually a new debut और उसको थोड़ा सा जो है ऑफ कोर्स वो उससे सारा मिला एंड देयर नो पॉइंट एक्चुअली उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है लेकिन उसमें पार्टनरशिप बिल्ड करने में उनको थोड़ा टाइम मिल गया ऊपर जिसकी वजह से जो है स्मिथ को जो है वो थोड़ा टाइम मिल गया और स्मिथ का आपको पता है कि वो शुरू में आता है तो अगर उसके ऊपर प्रेशर हो तो थोड़ा सा प्रेशर लेके खेलता है हर एक बैट्समैन का होता है तो स्मिथ का भी है लेकिन स्मिथ इस टाइम जो आया था वो ऑलमोस्ट 100 ऊपर पार्टनरशिप हो चुकी थी तो सॉरी टोटल रन हो चुके थे तो स्मिथ को हमेशा थोड़ा सा यही टाइम चाहिए होता है तो उसकी वजह से ही वाज एबल ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू इनिंग्स के अंदर उसका आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं सका था तो वैसे ही जैसे ही वो आया तो लग रहा था कि ही इज एक्चुअली इन अ डिफरेंट टोटली मूड टुडे उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट था और वो ऐसा ही लग रहा था कि ये विकेट देने वाला नहीं है जल्दी और इसका लॉन्ग इनिंग खेलने का प्लान है और ये बैट्समैन का जो अच्छा खेलने वाला था उसका आपको पता चल जाता है लेकिन इंडिया जो है अपनी साइड से ओवरऑल आई मीन अश्विन को देख लें अश्विन ने जो है जिस तरीके से अटैक करके रखा हुआ है दोनों बैट्समैन को शुरू से ही इट्स वेरी एक्चुअली अमेजिंग क्योंकि अश्विन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर एट दिस पॉइंट इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली यू कांट गो रॉन्ग ओवर देयर ऑफ कोर्स स्पिनर जो है वो लीक करता है इट्स नॉट लाइक आई मीन स्पिनर बाउंड्री नहीं पड़ती स्पिनर को बाउंड्रीज पड़ती हैं लेकिन स्पिनर का सिर्फ एक काम होता है विकेट निकालना वो विकेट निकालते सारी बाउंड्रीज उसकी कवर हो जाती हैं द ओनली प्रॉब्लम इज दैट एक्चुअली अश्विन को जो है ऑफ कोर्स ऊपर से मौका मिला था उसका जो कैच ड्रॉप हुआ है कीपर ने कैच ड्रॉप किया ऑफ कोर्स अब बॉलर के साथ ये होता है उसका थोड़ा मोमेंटम भी ब्रेक होता है लेकिन इंडिया इज एक्चुअली डूइंग सो फार वेरी गुड सिराज इज डूइंग वेरी गुड नवदी इज अ न्यू गाय एक्चुअली सॉरी डेब्यूट किया उसने ही एक्चुअली प्लेड वेरी वेल प्लेड मींस लाइक इन द सेंस ऑफ पुको को उसकी जो वीकनेस थी उसने उसको पकड़ा और पुको को उसने आउट किया व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस तरीके से मैं अरमान का इनपुट लूंगा अरमान तुम्हें देखो स्टीव स्मिथ पूरे दोनों टेस्ट मैच में फेल हुआ तीसरे टेस्ट मैच में आया तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी में है या वो अपना प्रेशर निकाल रहा है उसने कहा अपना आई हैव टू प्ले अ नेशनल गेम अगेंस्ट एन अटैक अश्विन व्हाट डू यू थिंक आई एम जस्ट स्पेसिफिक अबाउट स्टीव स्मिथ राइट नाउ आई थिंक स्टीव स्मिथ की बहुत स्पेकुलेशंस हैं वो बहुत इंटरव्यूज जो उसने बताए हुए हैं और वीडियोस में वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो बोलता है कि उसको भूल जाता है कि वो बैट कैसे पकड़ता है तो वो नेट में जाता है जब भी उसको अच्छा फील आता है ही नोज दैट अब मेरे को फीलिंग अच्छी आ रही है एंड देन दैट्स द एंड ऑफ द सेशन और he'll hit more balls and it's for him it's about feeling when he's feeling good देखो bad patch सबका आता है but as Micky even said great players they'll always come back and I'm pretty sure that he's going to go on to make a big 100 in this first innings क्विकली कमेंट लेते हैं थिंग रोल आउट करते हैं कि बजाज फैजान कह रहे हैं कि 170 के करीब स्कोर वो 226 डिफेंड करें कितना स्कोर करेगा ऑस्ट्रेलिया बताओ पहले तो ये बताओ फर्स्ट इनिंग में कितना लगता है सब एक वर्ड सबके साथ I think Australia is only going to want to bat one time and I think they're going to make more than 450 ओ 450 जी सजाद भाई हाँ मेरे ज़हन में भी ये था अगर स्मिथ की पार्टनरशिप चल गई 400-450 बनेगा और उनकी जो अब बॉलिंग अटैक है ना उसके सामने ये काफी बड़ा स्कोर है आई मीन विद द बॉलिंग दे हैव ठीक है सुल्तान भाई Yeah, with the rain of luck, I think 400 पे जाएंगे 400 पे जाएंगे जी अभी व्हाट डू यू थिंक आई थिंक अगर स्मिथ जल्दी आउट होता है तो बिलो 400 अगर वो आउट नहीं हुआ सेंचुरी मार दिया तो 400 प्लस अभी थोड़ा सा सामने करो कैमरा तुम राइट पर हो गए हो हाँ जी बिल्कुल यशश्री व्हाट डू यू थिंक हाउ मच ऑस्ट्रेलिया गोना स्कोर राइट नाउ इन फर्स्ट इनिंग यू आर म्यूट आई थिंक Sorry, yeah, I think they will probably score anything around 400, 450 easily. मिकी ये सबने तो अंडर एस्टिमेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को मतलब इंडिया की बॉलिंग को सब कह रहे हैं कि लंबी बारी करेंगे डू यू थिंक लंबी बारी हो रही है आई थिंक मैं अरमान से कंकर करूंगा क्योंकि एक ही बारी उन्होंने बैट करना है मेरे ख्याल में तो आई एम गोइंग क्लोज टू 490 480 चले फरूक भाई अब आपसे सवाल कर लेते हैं आज चुप चुप बैठे हुए आपको क्या लगता है कि कल के जो ड्रॉप कैचेस छूटे उसने तो रन नहीं किए अश्विन फैक्टर मुझे नजर नहीं आया इस टेस्ट मैच में अभी तक कौन नजर नहीं आया अश्विन का फैक्टर जो जिस तरह 2 टेस्ट मैच में लीड कर रहा है हाँ
यार देखो बात ये है कि स्मिथ जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है स्पिनर्स को खेलने में पूरी दुनिया में, और जब स्मिथ खेल रहा होता है ना फ्लो में, तो आप कोई भी स्पिनर लेके आ जाओ, कोई भी विकेट हो, तो वो आपको कोई भी स्पिनर हो ना वो फिर हल्का ही नजर आएगा। तो इस वक्त स्मिथ जो है वो खेल रहा है और बहुत तेज खेल रहा है। मैं ये मैच भी देखता जा रहा हूँ, साथ में चौके लगा रहा है ठीक ठाक गैप के अंदर। तो आई थिंक दैट्स व्हाई अश्विन नजर इसलिए नहीं आ रहा कि स्मिथ बहुत अच्छा खेल रहा है। 91 लविशन भी करके गया और एक बंदा आउट हो गया। मैं कहा वेड आउट, that's right. Wade out हो गया। मैं नेक्स्ट राउंड कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ नेक्स्ट राउंड रोहित शर्मा के ऊपर क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम अभी डू यू थिंक रोहित शर्मा बहुत कितने अरसे के बाद आ रहा है टेस्ट मैच में, लगता है कि परफॉर्म करेगा? I think he'll do well, and the reason is कि ये पिछले 2 मैचेस के मुकाबले ना ये जो पिच है, इस पिच में इतनी जान नहीं है। Like अगर आप देखो तो एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि एडिलेड एंड एमसीजी had a lot more bounce and stability। ये जो है एक तो बारिश है, उसकी वजह से ना इतनी ज्यादा पिच में लाइक फास्ट बॉलर्स के लिए उतना नहीं है। सो अगर उसको बैठने का टाइम मिल गया, अगर वो स्टार्टिंग में 10 ओवर टिक गया तो लंबा चलेगा। उसके वही है कि ही इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो निकाल लिया उन्होंने, पहले 10 ओवर में निकाल लिया तो सस्ते में चला जाएगा, अगर रुक गया तो फिर लंबी पारी खेल के जाएगा। अच्छा मेरा एक सवाल है इंडियन टीम के फैंस के, जो इंडियन को बड़ा फॉलो करते हैं, कि यार ये जडेजा जो है उसको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? वो बेचारा बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, जान दे दे, क्या करे वो? और वो ये भी करता है, तलवार भी करता है। चैलेंज ये है ना, जब आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं ना, तो जो दूसरा एक छोटा मोटा हीरा होता है तो उसको भी लोग दरकिनार कर देते हैं। यही हाल है कि लोगों की आंखें जब सामने विराट कोहली एंड वो सब दिख रहे हैं, तो एंड आई थिंक इट्स अ फैक्ट, लाइक अदर देन इंडिया, अगर वो किसी और टीम में खेल रहा होता, इंग्लैंड में खेल रहा होता, तो ही वुड हैव मेड द फर्स्ट 11 फॉर श्योर। पाकिस्तान में भी जडेजा why underrated? I don't underrate him at all. I think he's top 4 greatest all-rounders currently playing. Obviously, you're going to have Stokes as their number 1. There's Jason Holder, and then there's Saqib. I think Jadeja's right behind them. He has 3 triple-hundred in first class. I've followed him for a very long time, and trust me, he's one of my favorite players. So, Siri, what do you say about Jadeja? You like him? You want to see him more in the team or no? Oh, absolutely. See, the one thing is, it's interesting to note that with so many fast bowlers in India right now, Jadeja finds it difficult to get into the team. Had he played in the 90s or like even in the early 2000s, he would have been an automatic pick. Like India's approach towards winning overseas, like it's been different now. So they got fast bowlers. So that's because of the bench strength, it becomes very difficult for a guy like Jadeja to be in the team. And then if you look at it, I think he made a debut 10 years ago or something. Yeah. I think like 2000 somewhere he lost that IPL T20 and got bashed for it pretty bad when he debuted. Right? Yeah. अभी थोड़ा सा साइड में तुम्हारा साइड में अभी सज्जाद भाई और सुल्तान भाई पैसे तो पूरे बना रहा है यार वो जडेजा, खिला नहीं रहे। नहीं वो तो देखे जडेजा एक मेरा तो फेवरेट प्लेयर है हर फॉर्मेट में, अभी भी ही इज डूइंग वेरी वेल विद द बॉल। ठीक है ना, बाकी कंपोनेंट्स उनकी बैटिंग है वो तो आपको सबको पता है, फील्डिंग जो एक बहुत बड़ा उसका रोल है, वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक अभी जो सूरत हाल है वेट के आउट होने के बाद, आई विल जस्ट लाइक टू ऐड ऑन कि इंडिया की इस वक्त पूरी कोशिश होगी कि स्मिथ के अगेंस्ट जो विकेट है उसको वो अटैक करेंगे फुल, और उधर से विकेटें करा के, ताकि स्मिथ के ऊपर प्रेशर है, ताकि वो एक्सेलरेट करे स्कोर को। जब वो देखेगा ना कि विकेट गिर रही है, तो ही इज गोना ट्राई टू एक्सेलरेट टू पुट ऑन गुड स्कोर, दैट्स वेयर दे गोना गेट हिज चांस। अभी रेन के साथ भी है, इंडिया भी बहुत ज्यादा, इंडिया विल ट्राई टू बॉल स्पिन ऑन टू अटैक द अदर साइड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पेस, और I think they will try them to keep it under control. सज्जाद भाई मैं एक बात बताऊं, मैं जब इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था और पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच चल रहा था, तो मैं और अभी एक म्यूचुअल ग्रुप में फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, तो अभी ने मुझसे सवाल किया, इंडिया ने रैप अप कर दिया गेम, तो अभी मुझसे आई एम श्योर सीरियस में मुझसे सरकाज़म में नहीं पूछा था उसने, हाँ भाई मजहर भाई पाकिस्तान का क्या बन रहा है? आपको क्या लगता है कि मतलब कोई कंपैरिजन है इस वक्त पाकिस्तान, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट राइट नाउ पिकिंग, बट स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट मैच, विनिंग टेस्ट मैचेस एंड क्लोजिंग द टेस्ट मैच, डू यू थिंक कि है हमारा मैच अभी राइट नाउ? सज्जाद भाई, I think that's not a very
that's not the type of question that as a Pakistan fan I want to answer right now. इस वक्त I don't think that कि हमारे पास वो जो skill level है या competence level है वो वहाँ पे है. मतलब है इंडिया के पास बहुत ज़्यादा bench strength है और वो एक mental और emotional strength के साथ खेल रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान वाले अभी नहीं दिखा रहे हैं. नो डाउट पाकिस्तान में कुछ प्लेयर्स हैं, हीरा प्लेयर्स हैं, बहुत प्यारे प्लेयर्स हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन टू कंपेयर देम टू द इंडियन प्लेयर्स इट्स नॉट रियली फेयर टू देम. इस वक्त मतलब है जो टॉप टियर कुछ टेस्ट नेशंस हैं उसमें पाकिस्तान नहीं है. पाकिस्तान अब थोड़ा सा नीचे गिर गया उस स्टेटस से. एक ज़माना होता था कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और उस ज़माने में like they had a lot of really good talent and good players and they could knock over teams. लेकिन तब भी इंडिया was also competitive. इस वक्त I don't consider Pakistan to be as competitive as India and it's not a fair comparison. मेरा सवाल है ना, मैं दूसरे पे आता हूं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन माय सवाल. मेरा सवाल ये था कि इंडिया के पास फॉर्मूला है 20 आउट करने का, टेस्ट मैच जीतने का. ये मेरा सवाल था. हमारे पास अभी वो फॉर्मूला नहीं है, वो जो मिसिंग था. दैट्स व्हाट माय मेन क्वेश्चन. आई वाज नॉट कंपेयरिंग द 11 वर्सेस 11. जी कैश, क्या कहोगे? टेस्ट मैच लगता है कि ड्रॉ होगा या टेस्ट मैच लग रहा है कि आएगा, क्योंकि अभी फिर बारिश शुरू हो गई है. कैश, आई थिंक यू आर म्यूट. Well, if I go by Google, the chances are Australia is going to win the test match. But it looks like rain is winning the test match at this point. And if it continues like that, yeah, chances are it's going to draw pretty soon. But hey, you know what? This is a test match. That's what it is. It's not the ODI or something like that. You can foresee 30, 40 overs, what's going to happen. But these are the, days game, right? So anytime can change. But I have a feeling that, of course, looks like this is a little spongy wicket. I consider to be a batting wicket. And whoever is going to take time over here, they're going to make a lot of runs. No doubt about it. Okay. So India has a full fair chance Sure. to bounce back. Whatever the score Australia puts in, maybe 400 plus, that's okay. India should just take it easy, ball by ball, and they should be able to meet whatever the actually other end is. So Sure. I say that at the end of the day, it's whoever is gonna do the best, they're gonna win the game. But there is a good chance this test may draw. Okay, Shri, there's a question for you. Not to Wajad Faizan कह रहे हैं, not to forget Stark also needs to step up his game in bowling. Do you think like a Stark factor is missing the whole test match, whole series? I mean, I don't think so. I think overall, like as a unit, they've always bowled well. Like, and I think bowling on this pitch is going to be definitely a big challenge for everybody, because I think like for what the commentators and Australian commentators were saying, this is probably the flattest pitch that they've had this summer. So, you got to stick to your basics and then hope for the batsman to make mistakes. I don't think there's going to be anything really on the pitch that would get the bowlers to just bowl and pick wickets at ease. It's going to be a different ball game compared to Adelaide and Melbourne for sure. Okay, let me move on to Arman. Farooq भाई, कुछ सवाल है या मैं कुछ comments ले लूं? म्यूट पर हैं आप, म्यूट पर हैं. मैं क्विकली सबसे बस दो नाम पूछना चाहता हूं कि जो समझते हैं कि इंडिया की तरफ से बिगेस्ट परफॉर्मर होंगे बैटिंग में. दो नाम, 2 names that you think from India will be the biggest star performer. Yes, Arman. I think Pujara's going to make 100 this innings, and then I think Gill's going to continue his form from MCG to Sydney. मैं $5 का टिमोटन दूंगा जो सबसे ज्यादा सही होगा. So Shubman Gill and Pujara. Yes, Micky. मैं कहूँगा रहाणे और रोहित शर्मा. Yes, सुल्तान भाई. सुल्तान भाई म्यूट हैं आप. मेरा ख्याल है बिहारी भी अच्छा कर सकता है और शुभमन गिल भी. हाँ. Okay, ये सज्जाद भाई. I'm gonna be थोड़ा सा सेपरेट दूंगा. मैं कहूँगा क्योंकि उन्होंने कैच ड्रॉप किया to make up for it, Pant will bat well और जडेजा. मैं अभी भी जाने से पहले सज्जाद भाई, डोंट यू थिंक सिमिलैरिटीज है पुजारा और अजहर अली में? मुझे बैटिंग में आती है, वो तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरे चौथे का. डू यू थिंक? जी हाँ, और दूसरा ये कि मेंटल स्टेट जो है ना काफी जरूरी है अच्छा होना पुजारा का, क्योंकि वो जिस फोकस से खेलते हैं ना, बड़ा मतलब एक लेजर फोकस उनका हो
तो उनको आउट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। थोड़ा द्रविड़ भी याद आता है मुझे उनसे कि वो वॉल की तरह उनको रोकते रहते हैं। लेकिन कोविड ने उनकी तैयारी को अपसेट कर दिया, जबकि बाकी लड़के दे प्लेड IPL वगैरह। तो आई फील कि पुजारा की तैयारी वो नहीं हुई है जो उनकी होनी चाहिए थी। यस, अभी क्या कहते हो, पहले तो जरा बताओ जो फारूक भाई का सवाल था 2 लोगों का, फिर जरा पुजारा पे आना, लेकिन क्विकली, टाइम नहीं है ज्यादा। I think Pujara is due for a big score because as all the good batsmen, right? They will bounce back after that phase. Pujara ने पहले 2 टेस्ट में कुछ नहीं किया, but I think he's going to put extra effort to come. और 2 लोगों के नाम बताओ, क्या लगता है 2 प्लेयर्स के? सॉरी, I think Pujara and Bihari, both of them are good first class players, and I think they are due for a big score. And especially given the pitch, like it's a flat pitch, it's mostly like a subcontinent pitch at the moment. So these 2 guys, I'm betting on. yes, Shri, I have a 2 question. First, answer Farooq bhai question, like 2 performance for India, and then why India is focusing on Bihari. I mean, can you give some like quickly on Bihari as well? Yeah, so the 2 batsmen that I think are going to do well are Gill and Pujara. So I think for Pujara, he is, I mean, among the 4 dismissals, I think he's probably got 3 unplayable deliveries among the 4. And I think the one thing that he needs to concentrate this innings is like he needs to rotate his strike a little bit, because you don't want to give the bowler, you don't want to get the bowler get used to your batting style. I know it's a test match, but I think his strike rate has been a lot less compared to what his strike rate was in the last series. So I guess like he just needs to rotate it a bit. And I think for Vihari, I think like what happens is that like he's due for a big score. So and then he's a kind of batsman who can stay and then who can rotate a strike bit. So if he gets in, and I think it's going to be really huge. And then with a lower order, like if he stays with, see, if he's going to bat with Pant and Jadeja, right, he doesn't have to really do a lot, like because Jadeja and Pant can always score a lot more. So he just needs to make sure calm their nerves, and then even if he scores a slow innings, I think it's still going to be good. Sure. So Arman, there is a question for you. हमार कॉलेज जो I mean बहुत अच्छे यहाँ के TND के प्लेयर हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हारून सिद्दीकी के बहुत अच्छे दोस्त होते थे। वो सवाल कर रहे हैं फरूक सिद्दीकी नेशनल प्लेयर हैं, TND के प्लेयर नहीं है। अच्छा, ऑल्सो नेशनल प्लेयर। सही। अच्छा, वो सवाल कर रहे हैं आप, अच्छा वो अरमान से खुद सवाल नहीं कर रहे हैं आप, ये देखिए नेशनल प्लेयर से सवाल नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहा है अरमान को। फारूक सिद्दीकी, प्लीज गेट अरमान थॉट्स ऑन रहाणे एज अ कैप्टन। क्वेश्चन बड़ा, I mean Arman, it's a very tricky question for you. I'm going to be biased here because Rahane is my favorite Indian Test player. However, I think they have 2 different styles of leadership. मैंने पहले भी comment किया था कि I think within the team there's more intimidation when Virat Kohli is the captain on the field. Less people are likely to talk. He might get opinions, but I feel people feel more comfortable speaking to Rahane, whether that's an Ashwin, a Jadeja, Pujara. Now you see third test match में Pujara vice captain था, लेकिन उसको हटा के रोहित शर्मा vice captain बन गया third test में. So to summarize, I think there's still passion, there's still intensity, and then there's obviously still aggressiveness in both of their captains. They just go about it 2 different ways. I have a quick question with the Indian people who follow Indian team and Indian team, favorites. Do you guys think like रोहित शर्मा के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है? रोहित शर्मा के साथ को थोड़ा अंडरमाइन किया जाता है इंडियन सेटअप के अंदर? हमें ऐसा लगता है बाहर से। इंडियन IPL जिता चुका, क्यों लगता है ये भी बता दूं मैं पर्सनली। IPL इतने जिता चुका है, मतलब वनडे के में भी पता नहीं कितनी 200s हैं। यस, अभी अरमान, श्री, व्हाट डू यू थिंक, और मिकी? So I personally think like if you look at the careers, right, Kohli and Rohit Sharma started almost at the same time. The challenge was, or what Kohli did better than Rohit Sharma was consistency. India ke andar it was always given that Rohit Sharma has that God-given gift of timing, and like he's always like, the reason he got fast tracked into the Indian team is because of his talent. लेकिन उसके साथ हमेशा ये होता है कि वो टैलेंट को यूज नहीं किया उसने। स्टार्टिंग में पहले 2-3 साल कुछ अच्छे स्कोर्स नहीं किए। उल्टा Kohli is not as gifted, but he is almost like in the Dravid mold, wherein like he's worked on his skills, hard work करके उसने अपना consistency बनाया। रोहित शर्मा का ये perception always रहा है कि इसके पास gift है, but he doesn't use as much or is not as consistent as he's supposed to. नहीं, लेकिन Siddiqui, like, what do you think? Why we feel as an outsider that Rohit Sharma is undermined, right? I mean, he's lazy. Inzamam was also lazy, right? But like, we always give full respect to Inzamam.
Inzi bhai. Inzi bhai. See, I think one thing with Rohit Sharma, I think it's the perception. The perception around is that he's a great one-day player, T20 player, and then the perception is like, okay, so where do you fit Rohit Sharma in the test team? So I think based on his flamboyance, he tends to give you a feeling that he's probably not going to stick around for long. And maybe the selectors feel like his style of game would not suit for the test match. And again, like over a period of time, India has always been loaded at the top on the test. So it becomes a bit of a challenge where to put this guy in. And then sometimes they would be thinking like, okay, can we play a Hardik Pandya? Can we play a Jadeja instead of a Rohit Sharma? That's been, I mean, it's difficult. Like, I mean, yeah. Okay. फारूक भाई मैं कमेंट ले लूं जी, फिर मैं एक सवाल करूंगा. अमार खालिद कह रहे हैं कि हाउ डू यू गाइस प्लान टू इंक्रीज द व्यूअरशिप फॉर स्ट्रीम्स, लॉट्स ऑफ गुड कमेंट्री बट नॉट इनफ पीपल वाचिंग. जी अमार खालिद भाई शुक्रिया आपका इस फीडबैक का. इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप अपने पास ये फेसबुक पे शेयर करें या यूट्यूब पे शेयर करें और अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें डेफिनेटली. और आप बहुत अच्छा कमेंट दिया कि यस काफी अच्छी कमेंट्री आ रही है. और दूसरा ये कि आप नहीं है अभी तक शो में, तो अभी मेरे व्यूअर्स नहीं आ रहे, थोड़ा सा टाइम निकालें और आए ताकि अरमान कपूर आपसे सवाल करें. Yeah, and also I want to include one thing कि जैसे ये point this sportsman is not it been looks like there is like a sportsman is only covering Pakistan matches, but it's not. It's always covered. Our base is Canada, so we always love to promote Canadian cricket and Canadian players, national players, and all the series going on. So like that's why like we started this India versus Australia. Now we have audience from everywhere. So we're trying to mix and match and get all culture and communities in this program. So spread the word. That's all I can say. मैं सुल्तान भाई के पास आऊंगा. बस मैं से बता दूं, देखो अगर मैं आज ये शो सिर्फ अपने अगर सज्जाद भाई सुल्तान भाई के साथ कर लेता तो हम लोगों को पर्सपेक्टिव नहीं आता, बिकॉज अरमान, अभी श्री, मिकी, लाइक यू गाइज नो द डोमेस्टिक ऑफ इंडिया टीम, राइट? सो आई थिंक वो ओपिनियन लेने के लिए दैट्स व्हाई वी इनवाइटेड यू, और आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम भी तुम आओगे. ओके, तहाली कह रहे हैं कैन वी गेट अमार खालिद एंड अराफ शाहिद ऑन दिस. यार तहा भाई वो टीएनडी में हर जगह होते हैं भाई, शो मुझे तो करने दो, वरना अराफ इसमें भी आ जाएगा और खेलने नहीं देगा मुझे. I want Araf. I like Araf. अदील ऑल्सो लाइक अराफ. ओके जी, सुल्तान भाई क्या कहेंगे? बस क्विक नोट्स में लेना चाह रहा हूँ. डू यू थिंक, मैं अगेन आज क्या लगता है कि इंडिया आउट कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया को? देखिए उनकी कोशिश तो यही है, अगर उन्होंने विन की तरफ जाना है, इंडिया एक कंपेटिटिव टीम है, वो कभी भी ड्रॉ की तरफ जाने का नहीं सोचेगी, ठीक है? तो उनकी अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है, रिदम भी खराब हो रहा है बैट्समैन का, वो उसका एडवांटेज लेना चाहेंगे. और व्हेन इट कम्स टू स्कोर, वही जैसे मैंने कहा, उनको करेंगे कोशिश कि 400 तक रखें, और बाकी इंडिया इज गोना प्ले लॉन्ग इनिंग एंड आखिरी दिन में जाके फिर वो उनको फंसाने की कोशिश करेंगे. यार आमिर, वो ऑस्ट्रेलियन आया था अभी हमारे पास, डेविड वुडन, उसने इतनी उर्दू और हिंदी सुनी, वो चला गया बेचारा. So, but we asked David Wooden to come back because I think today we are pretty decent in balancing the language. So. अच्छा, मैं जहाँ ऑस्ट्रेलियंस की बात है, मुझे सज्जाद भाई का कमेंट लेना बड़ा अच्छा लगता है. वो बहुत फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलियंस को. जी सज्जाद भाई, ऑस्ट्रेलियंस को भी बुला लें, वो तो चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियन ने बुलाया सज्जाद भाई को? सज्जाद भाई हमारे ऑस्ट्रेलियन है. जी सज्जाद भाई, मैं फ्लिक मैं मार्क वॉ की तरह ही मारता हूँ. आप कभी मेरे मैच आके देखें, जिसको हमारे पाकिस्तान में फीलेक कहते हैं, ठीक है ना? तो बात दरअसल ये है कि आई एम द ओनली गाय हियर आई कैन गारंटी जिसके पास पाकिस्तानी शर्ट भी है, ऑस्ट्रेलियन शर्ट भी है और इंडियन शर्ट भी है. मेरे पास 2 इंडियन शर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो इंडिया के काफ़ी हैं, बड़े प्यार से मुझे इंडिया से ले लाते हैं शर्ट्स. एनीवेज, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऑस्ट्रेलियन टीम का क्रिकेट देखने को, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है. लेकिन स्टार्टिंग विथ, लेट्स गिव क्रेडिट टू द गंगूली एरा, उन्होंने अपनी मेंटालिटी बदली और उसमें हरभजन सिंह ने कहा कि जो ये हमें फेंकते हैं ना हम पे, हम इनको वापस जवाब देंगे. तो इंडियन क्रिकेट ने अपना माइंडसेट चेंज किया ओवर द पास्ट डेकेड और सो. और मुझे इसलिए ऑस्ट्रेलियन, एक ज़माने में होता था 80s में, मुझे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ मेरी फेवरेट होती थी, फिर वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट. लेकिन आजकल के दौर में मेरी फेवरेट सीरीज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की होती है. और अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो सारी रात और ये आगे से गालियाँ दे रहे हैं और वो शॉटें मार रहा हो, तो फिर नींद नहीं आती मुझे. आई हैव टू वॉच इट. करेक्ट. यस मिकी, क्या बोलोगे? डू यू थिंक कि अब रोहित, जो विराट कोहली का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल मुझे तो सीरीज में नजर नहीं आ रहा. डू यू थिंक कि आई मीन कि इंडिया सीरीज जीत पाएगा?
without मुश्किल लग रहा है. I think the way they're going about it, hopefully Rahane and the boys can pull it together. But मैं तो बड़ा रोहित शर्मा का fan हूँ. Honestly, I think the way he bats in ODIs and T20s, red ball cricket is a different ball game. Even Finch struggled in the beginning. UAE में जब पाकिस्तान के साथ खेला था, because he's predominantly a white ball player. So opening with the red ball is slightly different, with, especially when you have bowling friendly conditions. So I think it'll be tough. But अगर ये match draw हो जाए तो next match will be taken winner take all, right? मेरे पास से 5 मिनट्स है. मैं अरमान से सवाल का जवाब लूंगा, फिर मैं बस राउंड अप करूंगा. ओके अरमान और अभी यू कैन आंसर फॉर दैट. इंडियन टेस्ट क्रिकेट हैज बीन चेंज. सैयद आमिद रजा, इंडियन टेस्ट क्रिकेट चेंज इन 2015. They have only lost 3 to 4 test series since then. It's been big achievement. Ji Arman. Change in mindset. Obviously, I think ये comment already जा चुका है, and it's followed around, which is now the intent is to take 20 wickets to win a test match. As simple as that. I think they compared it as well. जब पहले India team जाती थी, any overseas tour, it's about from Dravid to Lakshman, and then obviously Sehwag against the new ball, right? So even Ganguly would make a few runs, and the only bowler we kind of had was Kumble or Zahir Khan. उसके अलावा और कुछ था नहीं, and they didn't care about taking 20 wickets. They played to draw, but now the intent is to play to win. And Kohli has been very clear with his selection as well, that he said, I need bowlers who can take 20 wickets. That's all. That's all I care about. We don't care whether we make 300 and we win. I don't care whether we make 500 and we win. I just need bowlers who can take 20 wickets. 20 wickets. Abhi, what do you think? Looking forward, Bajaj Faizan सवाल करें. Looking forward to Sharma versus Stag. Do you think कि अच्छा एक होगा सेशन? पहले शर्मा टिक तो ले 10 ओवर. शर्मा टिक तो ले. तो देखने में आएगा, नहीं तो उसका तो वही करियर रिकॉर्ड रहा है कि जाएगा तो पहले 2-4 ओवर में चला जाएगा, नहीं तो फिर लंबी पारी खेलेगा. Yes, Shri, do you think Rohit Sharma gonna survive first session of start? Red Cherry? Well, he definitely has the ability to survive. So again, it's about how you control your instincts, right? So I think if it was Rahane or somebody said, like, it's about swallowing your pride in a test match. So the more you swallow, the more you say survive. And or if he's batting on or like the Gavaskar strategy, like give the first hour to the bowlers and take the rest. Yeah. Mute. Mute. Farooqi, you are mute. अच्छा, सही है. सुल्तान भाई, क्विकली, एक तो यही वाला सवाल, दूसरा ये कि ये बताएं यार, बुमराह ऑफ कलर चल रहा है तो कोई मजा नहीं आ रहा. यानी कि बुमराह जब था वो 2005-15 से जब कहा कि जब इंडियन टीम ने टेक ऑफ किया तो आई थिंक बुमराह वाज अ फैक्टर. इसका एक क्विक सा वो दें, फिर हम रैप अप करते हैं आज को. देखिए, थोड़ा सा बुमराह के इसके डिसएडवांटेज हो रहा है, विकेट ज्यादा फ्लैट है, ठीक है ना. अगर थोड़ा सा विकेट पे होती, मूवमेंट भी थोड़ी ज्यादा होती और पेस उसको मिलता तो ज्यादा एडवांटेज होता. लेकिन इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है. जो अभी भी बात हो रही थी कि इंडिया का जो चेंज हुआ है, जो ट्रांजिशन हुई है, उसमें पेस का बहुत बड़ा हाथ है ना, क्योंकि दे गॉट द पेसर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस कैलिबर के, जो इतने ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं और बहुत अच्छी कंसिस्टेंट पेस को बॉल कराते हैं. तो अभी उसको बुमराह को एडवांटेज नहीं मिल रहा. इसीलिए सैनी की भी जो बात शुरू में हमने की थी, पॉइंट वो यही था. इसीलिए उन्होंने नटराजन जो है उसको नहीं रखा या ठाकुर को नहीं रखा, क्योंकि दे वांट, देखें ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक बहुत स्ट्रांग है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दे वांट टू काउंटर इट विद द सेम अटैक. इसलिए क्योंकि सैनी सबसे ज्यादा फास्ट है और नटराजन जो है वो मीडियम बॉल करते हैं, और जो आपके सिराज हैं वो मीडियम फास्ट हैं और सैनी फास्ट बॉलर है, और इसी तरह बुमराह फास्ट है. तो दे रिलाइंग ऑन दैट. और उसके बाद देखिए, टेस्ट क्रिकेट विद टाइम जो डिटेरिएट होती है आपकी पिच, उसकी वजह से जाहिर सी बात है, इसीलिए टुवर्ड्स 3rd and 4th डे या 5th डे आप स्पिन को ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं. तो वो जो शुरू में जो टाइम था वो निकल गया, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो आपकी रेन हुई है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आया है, क्योंकि बॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी आउटफील्ड थोड़ी सी वेट होगी, मॉइस्चर पकड़ेगा बॉल. ओके, क्विकली बस एंड ऑफ में नोट्स ले रहा हूँ सबसे वन बाय वन. जब आज का दिन एंड होगा, स्टार्टिंग फॉर अरमान, व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्टैंड कर रहा होगा या डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके होंगे. अरमान, यू आर म्यूट. Sorry. If they do not get all out,
I think Australia will bat, and they won't declare until tomorrow morning. I think they would only want to bat one time in this game if they don't get all out. Okay. Yes, Cash. Cash, can you hear us? I think उसको delay आ रहा है. Delay आ रहा है. Cash, you are mute. Yeah. Cash, what do you think? आज का जब day end होगा तो क्या लगता है? बस मैं ending notes ले रहा हूँ सबसे quickly. Yeah, so towards the end of the day, what I see is actually if the Australia is actually, I think they're probably going to go on. They're going to play all their guys. They're going to take one actually shot. एक बारी लेंगे और जितना maximum में खींच सकते हैं सो खींचेंगे. I don't see actually declaration coming without they getting out. If they don't, then eventually of course they will. But I think 400 तो हो रहा है. सही है. मिकी क्या कहोगे? मैं अभी हमने तो ले लिया कितना ऑस्ट्रेलिया स्कोर करना है. डू यू थिंक क्या डिक्लेयर करेगा या ऑस्ट्रेलिया कल और सुबह तक खेलेगा एक ही बारी और फिर इंडिया को 2.5 दिन में आउट करेगा? आई थिंक डिक्लेयर तो मुश्किल है बिकॉज बट आई थिंक अगर ऑल आउट हो जाते हैं तो लास्ट सेशन में शायद इंडिया फिर से बैटिंग करे. देड वांट अगर डिक्लेयर भी करता है तो देड वांट एटलीस्ट 15 overs minimum at the end of the day to get at least a couple of wickets from India. And that could be a strategy for them. सजाद, मैं एंड में आपके पास आऊंगा. श्री, व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया गोना डिक्लेयर द इनिंग लाइक आफ्टर टी एंड अलाउ इंडिया टू बैट 10 overs tonight? Maybe not possible because I think Australia also might have an understanding. They would get an idea of what the pitch is behaving, right? So I was just seeing one of the comments like there's not much movement even with the new ball for Bumrah. So they obviously would want to stack up as many runs as possible. So which means that they may not declare today. So Australia's idea would be they want to probably only bat once. If they don't get out, then they probably will bat even till tomorrow. Yeah. अभी तुम्हें लगता नहीं है कि अगर इंडिया को आज बैटिंग करा दी जाए, टायर्ड लेग्स होंगी, कल तो फ्रेश माइंड से आएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया गलती ना करेगा अगर आज बैटिंग नहीं कराई? अभी यू आर म्यूट आई थिंक. नहीं, ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं रह गई 2000 वाली. अब वो जिगरा नहीं रह गया कि 400 पे करते हैं, उसको बुलाते हैं सामने, उनको 200 पे ऑल आउट कर लेंगे. अब ये रिस्क एवर्स क्रिकेट खेल रहे हैं. अब इनके खुद की डेस्परेट टाइम्स हैं, तो ये दे विल ट्राई टू प्ले एज मच एज दे कैन. लाइक जब तक विकेट नहीं गिरेगी दे विल ट्राई टू मेक 400 500 as everyone has been saying. like इस टाइम पे वो यही कोशिश करेंगे कि एक बार खेलो, जितने बना सको बना लो. अब वो रिस्क ये तुम कह रहे हो कि वो नहीं रहा कि यार ये सेशन पे क्लियर करते हैं और बुला लो. जी सज्जाद भाई, पहले जो होता था वो नहीं है सीन अब. अच्छा, लेकिन मैं पहले जवाब दे दूं अभी भाई को. 2001-2 के एरा में मेरी शायद तो शादी हुई थी, एक लक्ष्मण और द्राविड की पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है ना? उसी 2000 वाले तुम जिसकी बात कर रहे हो, जगरे वाली टीम की. हाँ, लेकिन आई बिलीव के सबने ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया. एक ही दफा बैटिंग करने की कोशिश करेंगे, 550 तक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल बी सक्सेसफुल. दे विल बी ऑल आउट बिटवीन 420 to 450 टुडे. मिकी क्या कमेंट रह गया मेरे ख्याल में? मैं ये अभी भाई को काउंटर करना चाहूंगा. दिस अटैक जो ऑस्ट्रेलियन का जो है, दैट हैज द मोस्ट विकेट्स इन टर्म्स ऑफ वॉर्न, मग्राथ और ये अपने गिलेस्पी. ये इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में हमें स्टैट्स दिखाए थे ड्यूरिंग द टेस्ट मैच जी. और ये जो कमिंग्स और स्टार्क और ये लाइन का जो कंपैरिजन हो रहा था, उसमें आई थिंक दीस गाइज वर अहेड ऑफ देम बाय अ गुड मार्जिन. डिस्कशन जो है ना कल मैं अपने शो में स्टार्ट करूंगा. ये जो बॉलर्स का कंपैरिजन है, बस मैं अभी एंडिंग नोट करूंगा. मैं सज्जाद भाई से एक सवाल करूंगा. आपने जो दो चीजों की माइलस्टोन के बारे में बताया, एक माशाल्लाह आपकी पर्सनल और एक जो आपने बताया, अभी तक कौन सी चीज आपकी मेमोरी में अच्छी है? देखो कि बेगम तो नहीं कहीं घर में रहना है भाई, घर में रहना है, घर में ही रहना है. लेकिन एक बात मैं और कहूंगा जाने से पहले, ठीक है इंडिया के क्रिकेट टीम को मैं मानता हूं, लेकिन ड्रामे फिर भी पाकिस्तान में अच्छे बनते हैं. नहीं, कल इस पर बात करेंगे ड्रामो यार. एनीवे मैं शो को रैप अप करूंगा. थैंक्स एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम अरमान, अभी श्री, मिकी, कैश, सुल्तान भाई, सज्जाद भाई. यार आप आए, मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि सबको मैं ज्यादा टाइम दूं. कल डेफिनेटली अभी अब क्या है, कल रात बारिश भी हुई है और आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली कल वी विल मोर टॉक अबाउट. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम एंड मोर टॉक अबाउट, बिकॉज हमने सबका बैकग्राउंड ले लिया. तो कल का मैं कन्वर्सेशन स्पेसिफिकली थर्ड टेस्ट के ऊपर रखूंगा और होपफुली इंडिया की बैटिंग भी शुरू होगी, क्योंकि मैच के ऊपर हम बात करें तो ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है. अभी तो हमने सबका फीडबैक ले लिया. तो आई थिंक थैंक्स एवरीवन. आई होप कि कल आप लाइक शाम में 7 बजे दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे और इंडिया की बैटिंग जो है अच्छी एंजॉय कर रहे होंगे. जी फारूक भाई. मैं बिल्कुल वही बात में, बिल्कुल ये बात है यार, बिल्कुल जो टेम्पो आप आज छोड़ रहे हैं ना,
तो बिल्कुल यही टेम्पो से कल शुरू करेंगे। आज हमने बड़ी ना स्लो बिल्कुल टेस्ट वाली इनिंग शुरू की थी। मैं कहता हूँ थोड़ा आधा घंटा पहले घर में वार्म अप हो जाए, लड़े यू नो, अगर पार्टनर है, वाइफ है, भाई है, छोटे 2-3 लगाओ उनको, तो ताकि थोड़ा वार्म अप होके आना है। तो और मैं टेम्पो से शुरू करना है बिल्कुल। और यू नो आपका प्रोग्राम है, लोगों को बताएं। और आई थिंक द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज वेरी नाइस। वी शुड हैव मोर व्यूअर्स देन दैट। थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये कि लोग इधर उधर होते हैं, बट इंशाल्लाह विल हैव टुमारो। और बिल्कुल जो है ना वो इसी टेम्पो पे इंशाल्लाह कल शुरू। मैं इसी टेम्पो की एग्जांपल दूंगा। आपने कल जब आना है तो आपने अरमान के माइंडसेट से आना है, बी एग्रेसिव, बी अटैकिंग, बी ओपन। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं शो एंड करूंगा। फारूक भाई, फैजाद फैजान का मैं आखिरी लेता हूं। दिस शो इज बिकमिंग वन ऑफ माय फेवरेट आफ्टर ऑफिस डेली रिव्यू सेशंस। गुड जॉब गाइस, थैंक यू फैजान। आई मीन आप वॉच कर रहे हो और हम लोग को स्पॉन्सर भी कर रहे हो भाई, इसी तरह लगे रहो। और अमार खारिद प्लीज शेयर करो, तुम्हारे बहुत ज्यादा नेटवर्क हैं। और अरमान कपूर के साथ सवाल करते रहना। चलें फारूक भाई, बस मेरे ख्याल से मैं नोट ले लेता हूँ। और ओके गाइस जी, मेरा ख्याल है कल हम बॉलिंग अटैक के साथ ओपन करेंगे। मैंने बोला कि अरमान कपूर के माइंडसेट से ओपन करेंगे। तो बस अरमान कपूर नोज, मैं अरमान से ही स्टार्ट करूंगा। आउट हो गया भाई, जाते जाते आउट हो गया। आउट हो गया, 3-0 हो गया, अभी इसमें लगा हुआ है। 5 आउट। चलो ओके गाइस, हैव अ नाइस नाइट। नाइट।